In this video, I will show you that how the React.js will be connected with Express.js. So let's come to your favorite command prompt, and on this command prompt, first of all, you create a folder. So I'm creating a folder that is called a project, and then move to this project. So cd project. I'm opening here VS Code, that code dot. And inside this project folder, go to the terminal and open a new terminal. Inside the root project folder, you have to create the two folders, one for the backend and another one is for frontend. So for the frontend, we are using here React.js, and in the backend, I will use the Express.js. So first of all, create frontend, and second one is the backend. So let's move to the front end first and create a React project. So first of all, I'm creating the React project that is called the npx create React app. And inside the current folder, I'm creating a React project. So place dot. So it will take some time to install the React.js. Until then, I'm just stopping the video. And once it is finished, then I will come back. Alright guys, so हमारा रिएक्ट इंस्टॉल हो गया है और फ्रंट एंड के अंदर में आकर के देखिए तो यहाँ पे हमारा नोड मॉड्यूल्स पब्लिक और यहाँ पे सोर्स फोल्डर है, राइट। यहाँ पे हमारा app.js और app.js के अंदर में हमारा बेसिक जो सेटअप है वो मिल गया। अगर आप इसको एग्जीक्यूट करके देखना चाहते हो तो यहाँ से आप कर लो npm start. So here is our React running successfully. Now come to the VS Code. And now come back to the backend where we will install our Express.js. So for creating the Express.js, let us create a new terminal again. So this is our second terminal. Go to the backend. And inside the backend, first of all, you have to initialize. So npm init. Now install the Express in backend. So here is our npm install and then Express. So यहाँ पे हम लोगों का जो भी बेसिक चीज़ें चाहिए बैकएंड के लिए वो सारा इंस्टॉल हो गया है और यहाँ पे हमारा है index.js. इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं अभी server.js. और एक चीज़ और चेंज कर लेते हैं, अगर आप चाहते हो ES6 सिंटेक्स यूज करने का तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं type and the type should be module. Now come back to the backend folder and create a new file that is called the server.js. Now inside the server.js, first of all import the Express. So write down here the Express from Express and create an app constant, and here we are writing the port number 5000, and another one is the callback function, and here you write down the console.log. Server started at port number 5000, and let's see that whether the server is started or not. So writing here the node and then server.js. Yes, so our server is started, but we cannot make any HTTP request. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं app.getRequest, और get request के लिए यहाँ पे यूज कर लेते हैं /API and then request and response, and here is a callback function response.send, and write down this is from server. Here you have to close the server and then restart it. So it is started at port number 5000. Now come to the browser and open a new tab, and here I am writing the localhost and port number is 5000 and / we have to use the API, and we are getting here the result. So our front end and back end both are working
Now I want to make the request from the front end. So here is our front end. Come to the front end folder, and inside the front end folder we have a source folder, and inside the source folder we have the app.js. So first of all, remove this content and write down here the h1 react plus express, and you see the output in the front. Here we are getting react plus express. Now create a button, और इस बटन पे जब हम लोग क्लिक करेंगे तो मैं एक HTTP रिक्वेस्ट सेंड करना चाहता हूँ सर्वर को, एंड द सर्वर विल रिटर्न बैक सम इंफॉर्मेशन टू द फ्रंट एंड, राइट. तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ऑन क्लिक. So let us create here the handle click function. So here is our function, and then handle click, and inside this handle click let us write the console log and write down here testing button. अब आप फ्रंट एंड के अंदर में एक और चेंजेस करेंगे, और उसके लिए आपको प्रॉक्सी सर्वर सेट करना पड़ेगा. तो इस फ्रंट एंड के अंदर package.json में जाना है और यहाँ पे आपको प्रॉक्सी सेट कर देना है. So here is our proxy, and inside the proxy we have to write here the HTTP, and here is our localhost, and the port number was 5000 for our server, right? So this setup you have to keep in mind. अब यहाँ से जब हम लोग बटन को क्लिक करेंगे तो मैं यहाँ से एक fetch API यूज करूँगा, और इसके लिए यूज करते हैं हम लोग. So inside the fetch we have to write down the /API जो हम लोगों ने अभी सर्वर में बनाया है, right? Then you have to write then, and then you get the response, and this response is now converted into JSON. So response.json, return the promise, and then you have to get the data. Once you get the data, then you try to write down the console log and print data. So we have got this error. अब इस एरर को रिमूव करने के लिए सबसे पहले आप जाओ फ्रंट एंड वाले के ऊपर, और फ्रंट एंड हमारा चूंकि पहले से स्टार्टेड है, पहले इसको स्टॉप करते हैं यहाँ पे एंड रीस्टार्ट करते हैं. सो npm start. सो हमारा रिएक्ट स्टार्ट हो गया फिर से, और इसको हम लोग चलते हैं फिर से इंस्पेक्ट के ऊपर, और यहाँ पे हमारा कंसोल है. अब जब हम इसको क्लिक करते हैं, so we are getting here the unexpected token T. So this error can be removed by using the JSON. So once you are getting the data from the server, then in place of this send, you just have to send the JSON data. And here we are passing the JSON information. So यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर में, और यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं JSON फॉर्मेट में, और यहाँ लिख देते हैं सपोज मैसेज, right? And go to the browser and refresh it. So here we have got the message. तो यहाँ पे आपका कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया है, and I hope you understand that how the front end and back end is to be connected, right? और अगर आप चाहते हो कि इस मैसेज को जो फ्रंट एंड पे आया है उसको कंसोल पे ना दिखा करके अगर हम लोग इसके स्क्रीन पे शो करें यहाँ पे, तो उसको भी आप कर सकते हो. तो उसके लिए आपको थोड़ा सा और चेंजेस करना पड़ेगा फ्रंट एंड के अंदर, और फ्रंट एंड के अंदर हम लोग चलते हैं app.js में, और यहाँ पे आपको और यहाँ पे उस वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम लोग यूज करेंगे, और यहाँ पे सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा रिएक्ट को. सो हियर आई एम इंपोर्टिंग द रिएक्ट, एंड इसके बाद एक और चीज आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, दैट इज the use state hook. Now create here a variable that is my message, and here is set my message, and use state and initialize with blank. और यहाँ पे जो भी my message है उस मैसेज को मैं यहाँ पे शो कर लेता हूँ. So here I am creating a paragraph, and inside this
I want to show the message. So message is, so write down here the my message, and this time you will see here the my message is nothing, right? And once I will click on this button, the message will come from the Express, right? So here whatever the message we are getting over here, that is to be displayed over here, right? So here you use the set my message, and inside this you pass the data dot message, right? Now come to the browser and let's see the output. Here we are getting the message. This is from server, right? So I hope आपको ये वीडियो समझ में आया होगा. So that's all for this video. We will see you in the next video. And if you are new to this channel, then please like, share and subscribe. Thank you for watching this video.